आपण माननकु एही वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत। तो आज एही वीडियो रे मु आपण मानन सहित +3 फर्स्ट ईयर सेकंड सेमिस्टर हिस्ट्री जेई रो बा जनरल इलेक्टिव हिस्ट्री रो यूनिट 3 रो किछि सिलेक्शन 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कशन करबी। तो यूनिट होछि कोन सोशल एंड कल्चरल पॉलिटिक्स रो किछि 1 मार्क्स क्वेश्चन मुझे आपन सहित शेयर करी। मुझे पूर्व यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी वीडियो बन सारी। जदि आपण मैंने देखी ना तो चैनल को जाई देखि पारिबे। तो चैनल तो स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थियोसॉफिकल सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग सैल्वेशन वाज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी कौन अकॉर्डिंग कौन द प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग ऑफ सैल्वेशन वाज कौन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस मूवमेंट्स वाज डायरेक्टेड बाय सर सैयदी अहमद खान। अलीग्राह मूवमेंट वाज द डायरेक्टेड बाय शाहिद अहमद खान। तो शाहिद अहमद खान अलीग्राह मूवमेंट को कौन डायरेक्टेड करते। सर सैयदी अहमद खान वाज बोर्न दिल्ली इन 1880। तो 1870 मसीह सैयदी अहमद खान दिल्ली रे कौन जन्मग्रहण करते। सर सैयदी अहमद खान वाज ग्रेट सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो कौन से गोटे कौन वेस्टर्न एजुकेशन सपोर्ट थे कि सैयदी अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीग्राह वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयदी अहमद खान इन 1877। तो 1877 मसीह एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कौन कहा द्वारा ना अलीग्राह जो अच्छी से क्या द्वारा स्थापित होता सैयदी अहमद खान को द्वारा 1877 मसीह स्थापित होता। इन डेज पेयर अलीग्राह मूवमेंट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल स्प्रेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुस्लिम कम्युनिज्म कौन गोटे स्प्रेड करने मुस्लिम कम्युनिज्म को अलीग्राह मूवमेंट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू राधा स्वामी सत्संग मूवमेंट गुरु इज कौन गॉड। These social events were condemned as a result of reformative movement. Polygamy, caste system, sati system, social evils were the common of a result of the reformative movement. Next question. These poetical and literary works contributed to the rise of patriotism and nationalism. तो कौन ना आनंद मठ और गीतांजलि दीटा कौन करथिले ना पोएटिकली और लिटरेली कौन वर्क कार्य कौन करछि ना कंट्रीब्यूट करछि देश कौन देश प्रेम और देशात्मक बोध पई आनंद मठ गीतांजलि लिटरेली और पोएटिकली कौन कार्य करछि। फर्स्ट ऑफ ऑल मद्रास वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन कलकत्ता। ए स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन डेज 1791 टू इम्पोर्ट एजुकेशन संस्कृत। ए स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन संस्कृत इन 1791 इम्पैक्ट एजुकेशन। Next question, the Charter Act 1813, the British Parliament passed a budget for annual expenditure education amount rupees 1 lakh। तो 1 लाख कौन चार्टर अकाउंट 1830 रे ब्रिटिश पार्लियामेंट बजेट पास करथिले कौन पे एजुकेशन पे। डेच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड टू बी मीडियम इंस्टीट्यूशन बाय द लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इंग्लिश लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड to be the medium of instructions by Lord William Bentinck. This encouraged the voluntary institution for establishment of schools and colleges. Sir Charles Wood encouraged the voluntary institutions for the establishment of schools and colleges. I did not find any religion so complete, scientific, philosophical, and spiritual than Hinduism. As much as you know, if you will love it so much, they said, Mr. Ani Besant said. The priority for the development of primary education 1882 to 1883 was recommended by the Hunter Commission. This got to the Indian University Act passed the established control over the Indian University and College Cornwallis got the Indian Universities Act passed to establish control over all the Indian universities and colleges. This was the chairman of Hatlock Committee organized in 1922. John Hattock was the chairman of Hattock Committee organized in 1922. This plan was proposed by the Central Advisory Committee in 1944-80. Saranganath plan
was proposed by the Central Advisory Committee in 1944 AD. This helped a lot to modernization of India. Middle class intellectuals helped a lot to modernization of India. This printing press established Bombay by the English in 1684 AD. Printing press established in Bombay by the English. Next question. The economic policy of English was known as strain of wealth. The economic policy जो English मान थी British मान थी ताको जन आछना strain of wealth भाव जन आछना. This had introduced the Widow Marriage Act. Widow Marriage Act के Lord Dalhousie विधवा पुनर्विवाह आईन बा एक्ट किए करथिले Lord Dalhousie करथिले. In your days Marcellus Minors work in India 1835 रे Marcellus कौन करथिले ना minors work out in India. Next question. In your days your Woods Dispatch was implemented in India 1854. In 1854 your Woods Dispatch was implemented in India. Sudhi movement was started by Swami Dayananda Saraswati. This gave the call one religion, one caste and one God for mankind. Sri Narayan Guru gave the call one religion, gote dharma, gote jati, gote bhagwan. Next question. The first national news agency of India was called the Press of India, the Free Press of India. The government of India passed the Hindu Widows Remarriage Act in the year of 1856. तो कौन 1856 मसीह कौन गवर्नमेंट गोटे पास कले कौन विडो रिमेज एक्ट को पास कले माने विधवा पुनर्विवाह आईन जो एक्ट थिला आईन को 1856 मसीह पास कले. इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन इन द ईयर 1835. तो 1835 कौन इंग्लिश गोटे लैंग्वेज होगा कहाँ माने ना भारतीय शिक्षा व्यवस्था इंग्लिश गोटे लैंग्वेज होगा. राममोहन रॉय वाज बोर्न इन द दिस ईयर 1774. तो 1764 मसीह राममोहन रॉय कौन जन्मग्रहण करते. द न्यूज पेपर देश वाज पब्लिश्ड बाय राजा राममोहन रॉय. संवाद कौमुदी तो संवाद कौमुदी राजा राममोहन रॉय कौन पब्लिश करते न्यूज पेपर टी गोटे. आर्य प्रकाश वाज पब्लिश्ड बाय कौन स्वामी दयानंद सरस्वती. द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंड बाय डेस एंड डेस. थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ का मतलब फाउंड माने जो फाउंड करते मोहम्मद एचपी ब्लाभास्टी एंड कर्नल एचएस ओलकट ए दुजन कौन करते ना थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड करते. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया केम टू वन एंड इन ईयर 1829. तो 1829 मसीह सती जो थिला सतीदाह व्यवस्था से कौन समाप्त होता. द अनटचेबल मूवमेंट इन महाराष्ट्र फ्रॉम 1920 वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर बी आर आंबेडकर. डॉक्टर बी आर आंबेडकर द्वारा अनटचेबल मूवमेंटा कौन महाराष्ट्र में 1920 मसीह कौन स्टार्ट होता. द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट was passed in the year of 1878. This abolished the censorship act but laid down sector rules. Lord Hastings. This is known as the Grand Old Lady of Indian nationalism. Mr. Annie Besant. Annie Besant is known as the Grand Old Lady of Indian nationalism. So who was the Grand Old Lady of nationalism? Mr. Annie Besant is known as the Grand Old Lady of Indian nationalism. The Aligarh Muslim University was established in the year of 1920. तो 1920 मसीह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन एस्टाब्लिश होता स्थापित होता. As a step towards Theosophical Society, Mirza Ghulam and Ahmad united some like-minded Muslims under the banner of Ahmadiyya movement. तो अहमद मूवमेंट द्वारा कौन करथिले ଗୋଟେ step towards Theosophical Society, Mirza Ghulam Ahmad unite some like-minded Muslims under the banner of Ahmadiyya movement. The Theosophical Society of India came into being at the idea in Madras in the year of 1886. This made Theosophical movement very popular in India. Mrs. Annie Besant made the Theosophical movement very popular in India. तो ये जो movement था ताको Annie Besant इंडिया रे popular कर पारथिले. The condition of India before recent was superstitious. The name of Raja Rammohn Roy's social and religious movement was Brahma Samaj. Next question. The chief aim of expansion the Western education was to prepare faithful clerical group of Indians. In spite of all strange recent movement, the British government empowered to the India to modernization.
हु स्ट्रेस्ड ऑन फीमेल एजुकेशन राइट्स स्वामी दयानंद सरस्वती कौन होला फीमेल को जो एजुकेशन ऊपर से बहुत चिंता माने स्ट्रेस करथिले which class rose to prominence as a result of national awakening middle class rose to prominence as a result of national awakening. Which of the following is called the representative in modern age? Raja Rammohn Roy. Following the is the called representative in modern age. Raja Rammohn Roy was born in 1774 in a Brahmin family. तो 1764 मसीह राजा राममोहन राय ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करथिले. Raja Rammohn Roy get retirement from his service of Tin East India Company 1814. तो 1814 मसीह राजा राममोहन राय तांको सर्विस कौन रिटायरमेंट होइथिले ईस्ट इंडिया कंपनी टू. सोशल इविल्स लाइक सती सिस्टम इन्फानिटाइल चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा वे कमेंट बाय कौन राजा राममोहन राय से कौन कमेंटमेंट होइथिला. ए गुडे कौन राजा राममोहन कहथिले ए बोले समाज पय बोले इविल बोले कहथिले राजा राममोहन राय. Which newspaper were started by Raja Rammohn Roy? Sambad, Khamundi and Miratul Akbar newspapers were started by Raja Rammohn Roy. Who was the founder of Arya Samaj? Arya Samaj founder किए ना स्वामी दयानंद सरस्वती was the founder of Arya Samaj. What was the yearly name of Swami Dayananda Saraswati? Mool Shankar was the yearly name of Swami Dayananda Saraswati. Why did Swami Dayananda Saraswati leave home in 1845 unwilling to be married? So Swami Dayananda Saraswati leave home in 1805 because he unwilling to be married. Which was the most significant social reform of Swami Dayananda? Purification by Shuddhi was the most significant social reform of Swami Dayananda. In whatsoever name or form you desire to call him, in that very form of the name you will him who said Ramakrishna Paramahansa. Who named the mission of Brahmanas as Ramakrishna mission? That is Brahmana. Who named the mission of Brahmanas mission? Swami Vivekananda named the mission Brahmanas as Ramakrishna mission. Paramahansas as Ramakrishna mission. That is Paramahansa. Later. Swami Vivekananda's yearly name was Virendranath. So Virendranath, Swami Vivekananda's yearly name was Virendranath. You become quite late. You have taken bath as an instance of Lord Narayan, who said for it Vivekananda, Krishna Paramahansa. Krishna Paramahansa said, you become quite late. You have taken bath as an incarnation of Lord Narayan. It is said for Vivekananda by Krishna Paramahansa. Where was the World Religious Conference held? Chicago. तो Chicago रे World Religious Conference टा कौन होइथिला? Who made religious dynamic and powerful? जो थे कि कौन स्वामी विवेकानंद संस्कृत रे भाषण देथिले. Who made religious dynamic and powerful to face Islamic and Christianity? Raja Rammohn Roy made religion dynamic and powerful to face Islamic and Christianity. The Theosophical Society was founded in New York in 1875-80 by Madame H.P. Blavatsky and Col H.S. Oldcloth. ये दुई जना कौन करते ना थियोसॉफिकल सोसाइटी को 1875 मसीहा न्यूयॉर्क रे कौन फाउंडर स्थापित करथिले. The branch of Theosophical Society was established at Adyar in Madras 1868. So 1868 AD, the branch of Theosophical Society was established at Adyar in Madras. Mrs. Ania Besant, the chief of worker of it is called an Irish lady. So Ania Besant को chief worker थी कोड ना Irish रो थी सी. When Ania Besant became the president of India National Congress in 1917, Ania Besant became the president of India National Congress. Who was Macaulay? Law member of Governor General Council. तो Macaulay के थे ना कोडे कौन law member of Governor General Council रो कौन law member थे. When Macaulay presented his minors तो कौन 2 February 1835 रे Macaulay presents his minors. When English become language in Indian education 1835 मसीह इंग्लिश कौन बोला ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लैंग्वेज भाग परिचय देला.
हु वाज चार्ल्स शूट की थिला प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन चार्ल्स वाज थिले व्हेन वुड्स डिस्पाच वाज पास्ड 1854 ये कौन है वुड्स डिस्पाच कौन है पास हो गला व्हेन हंटर कमिशन सबमिटेड दिस रिपोर्ट 1838 तो 1883 हंटर कमिशन सबमिटेड हिज रिपोर्ट्स who imposed the first censorship on press in 1799. Lord Wellesley imposed the first censorship on press in 1799. Next question. When the censorship act was imposed on journals, pamphlets and books, 1807. In 1807, the censorship act was imposed on journals, pamphlets and books. तो 1807 मसीह कौन ना सेंसरशिप एक्ट कौन है ना इम्पोज ऑन कौन है ना journals, pamphlets and books रे सी इम्पोज है. Who was the founder of सत्यशोध समाज? ज्योतिबा फुले was the founder of सत्यशोध समाज. What was the name of the book published by ज्योतिबा फुले in 1872? Gulamgiri was the name of the book published by ज्योतिबा फुले in 1872. तो ये थिला कौन यूनिट 3 रो किसी 1 मार्क्स क्वेश्चन आर नेक्स्ट वीडियो यूनिट 4 डिस्कशन करा पर मु यूनिट वाइज 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन मध्य वीडियो अपलोड आपन सहित पोस्ट करबी. तो थैंक यू टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो. जदि आपन माने यार पीडीएफ चाहता है डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक अछि जॉइन हंतु आपन मिल जिवो एही पर वीडियो पे आपन चैनल जोड़ जानतु. थैंक यू टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो.